करने से आपका ये हिस्सा जो है लेफ्ट साइड ऊपर और ये नीचे, मतलब जो मैंने हाथ रखा है ये पोर्शन थोड़ा सा कर ज्यादा, ये फ्लैट, ये नॉर्मल है। ब्रीथ लीजिए, छोड़िए, चलिए ब्रीथ लीजिए, छोड़िए, ब्रीथ लीजिए, छोड़िए। बहुत पेन हो रहा है। थोड़ा सा पेन होगा, बस इसलिए नहीं कर पाऊंगा। ओके, वन मोर टाइम, ब्रीथ, good, good, good. जो आपको इधर पेन हो रहा है ना, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कर्वेचर कर रहा है। तो जो मैं कर रहा हूँ इससे आपका पोस्चर जो ये थोरेसिक एरिया का है ये फ्लैट हो जाएगा। राइट इस तरह घुमा दीजिए, इस तरह लगी हुई है जाना, इस तरह करिए। और इसे एरिया भी को लगा सकते हैं। ये जो पोर्शन थोड़ा ज्यादा कर्वेचर था ना, जब एक फ्लैट था, ये दोनों इक्वल तो इस तरह एकदम yes. आपका पेल्विस एरिया है ना वो डिसलोकेट हुआ है। हाँ, ये पेल्विस है ना, हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे तो ये सेट हो जाएगा और आपका पेल्विस सेट हो जाएगा। आपको भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि आपका जो एरिया है ये ऊपर नीचे, इसकी वजह से नाभि आपकी सड़की हुई है।
अभी जब मैं एडजस्टमेंट करूंगा तो आपकी नाभि भी मैं सेट करूंगा, ओके ना? I hope ये सब सेफ है। आपको क्या लग रहा है? आप सोचिए, लास्ट 11 ईयर से मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 4 स्टेट में कर रहा हूँ। अगर ये सेफ नहीं होता तो इधर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा। क्या होता है, जब आप एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और एक न्यू थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो दोनों में अंतर रहता है ना, हाथ में। सेम वैसे एक्सपीरियंस डॉक्टर और बेसिक डॉक्टर में थोड़ा सा अंतर होता है। ये देखो, ये जो पोस्चर है आपकी पूरी बॉडी एक सिंगल लाइन में है, राइट? अब मैं आपके पेल्विस पे हाथ रखूंगा और आपके स्पाइन पे हाथ रखूंगा ताकि किसी पे भी स्ट्रेन ना हो, ओके ना? आप सिर्फ बॉडी को लूज रखिए ताकि मैं जो करना चाह रहा हूँ वो कर सकूँ। रेडी? बॉडी जितना लूज रखेंगे उतना उतना आपके लिए कुछ मत करिए। Oh.